फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी टेस्ट हैं उन सभी को अननोन कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. These tests we should know: Mollis test, Benedict test, Barfoot test, Fehling test, Nylander test, Selivanov test, and rapid furfural test. And one more is the iodine test for polysaccharides. So these tests are performed for identification of unknown carbohydrates. So one by one we'll discuss. Now first of all we go through the Mollis test. Mollis test is the used for common for all carbohydrates, for identification of all carbohydrates. It is a general test for carbohydrates. So carbohydrates undergo dehydration upon the introduction of concentrated mineral acids, resulting in the formation of furfural. कार्बोहाइड्रेट को जब हम concentrated H2SO4 के साथ में मिक्स करते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड होकर के फर्फ्यूराल में कन्वर्ट हो जाते हैं. Furfural undergoes condensation along with the two molecules of alpha naphthol, resulting in the formation of a purple or reddish purple colored complex between the junction of two liquid. दो लिक्विड के जंक्शन में ये एक रिंग बनाते हैं पर्पल कलर की. दिस द टेस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर रिंग is the positive test for all carbohydrate. It is a Mollis test. Now for this test we use the reagent that is called Mollis reagent. In Mollis reagent there is nothing alpha naphthol dissolved in 5% alpha naphthol dissolved in ethanol. So one or two drop of Mollis reagent mixed with testing solution or observing solution, then we add their concentrated H2SO4 carefully, and at the junction of the concentrated H2SO4 and observing solution, we find there is a purple color ring. That purple color ring formation is the indication of the positive of carbohydrate, or presence of carbohydrate in observing solution or test solution. This is the reaction of Mollis test. Glucose, D-glucose, which is a 3 water molecule released from glucose to form furfural in the presence of concentrated H2SO4. This released 3H2O molecules will absorbed by the concentrated H2SO4, because concentrated H2SO4 is a property of we know can say that is a hygroscopic property. So due to hygroscopic property of H2SO4, these 3 water molecule is escaped from glucose molecule, and glucose is converted into furfural. Now this furfural react with the two molecule of alpha naphthol to form this complex, and this complex are ultimately converted into purple color dye. This purple color dye, which is present in the between the junction of the two liquid, it is a purple color ring formation in this test. So it indicates the positive test for carbohydrate. Now for test we observe that we from that 3 columns: one test, second observation, and inference. 2 ml of observing solution mixed with 1 or 2 drop or 1% alcoholic alpha naphthol. As I told you, this is the Mollis reagent. So 1 or 2 drop of Mollis reagent mixed with the test solution, and add 2 ml of concentrated H2SO4 slowly from the side of the test tube. टेस्ट ट्यूब के साइड में हम इसको concentrated H2SO4 को मिक्स करते हैं. 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया तो 2 ml
H2SO4 हम कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हैं टेस्ट सोल्यूशन जिसमें मॉलिस रिएजेंट पहले से हमने ऐड कर रखा है। तो क्या द कंसनट्रेटेड H2SO4 टेस्ट सॉल्यूशन में जो कार्बोहाइड्रेट है यदि तो उसको हाइग्रोस्कोपिक के कारण हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के कारण उसमें डिहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू परफ्यूरल और दैट परफ्यूरल react with alpha naphthol to form purple color dye. Purple ring further observation, purple ring at the junction of the two liquids will form. That indicates the presence of carbohydrate in the solution. Now in friends, it is a group test to detect the presence of carbohydrate. When carbohydrate are tested with a strong mineral acid, when carbohydrates are treated with a strong mineral acids like concentrated H2SO4, they loses 3 molecules of water to form a 5-membered cyclic compound that is called furfural or its derivative. The furfural and its derivative then reacts with organic phenol or alpha naphthol to give purple color complex that form a ring. So this is the test of Mollis test. Now next is Benedict test. Benedict test is used for identifying the reducing and non-reducing sugars containing free aldehyde or ketone group tautomerized by weak alkali like sodium carbonate to form enediol, which are powerful reducing agent. These enediols reduces cupric ions to cuprous ions with the help of the sodium citrate in alkaline medium. The resultant cuprous ion then accept the hydroxyl ion from aqueous phase to form a cuprous hydroxide, which upon heating form the red precipitate of cuprous oxide. Cu2O का रेड precipitate form होता है, that is the final results. So Benedict test is the test for the identifying reducing and non-reducing sugars. Glucose, fructose, maltose, lactose, and these are the reducing sugars, and sucrose is only, as we know that is a non-reducing sugars. Reducing sugars are those sugars which have a free functional group aldehyde or ketone. So they reduces this reagent to form cuprous oxide, which is a red in color. And sucrose is non-reducing sugar because the as we know that the sucrose is a disaccharide which is a form of glucose and fructose. Aldehyde group of glucose and ketonic group of fructose, they both are engaged in the formation of glycosidic bond in sucrose. So sucrose is only disaccharide, that is a non-reducing sugar, which performs the negative Benedict test. Now Benedict test reactions, CuSO4 react with the sodium carbonate to form a Belews white PPT, and this is the reagent, and it react with the sodium citrate to form a cupric dissociated complex with sodium, and this is present in reagent. Glucose react with alkali reagent and heated with this reagent to form enediol. Enediol react with cupric ions which is present in reagent as produced in previous reactions, which reduces to form the cuprous hydroxide and sugar acids. This cuprous hydroxide, which is a greenish yellowish PPT, when we heated the solution, so this cuprous hydroxides finally converted into cuprous oxide, that is a brick red PPT. That is brick red. It is a positive indicator of reducing sugar, which is present in unknown solution. Okay. Now this is the table for Benedict test. Benedict reagents contains a sodium citrate, sodium carbonate and copper sulfate. It is quite stable. Sodium citrate prevent the precipitation of cupric hydroxide. Cupric hydroxide, which is in green color, as I told you, इसको precipitate होने से रोकता है sodium citrate, and ultimately we will get a
brick red color brick red color of cuprous oxide. Now टेस्ट कैसे लगाएंगे? 5 ml of Benedict reagent. First of all, we take the reagent in test tube 5 ml and 7 to 8 drop of observing solution or a test solution added with droppers and boil for 2 minutes. Observe the color of the precipitate. उसको बेनेडिक्ट 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं और 2-3 ड्रॉप उसको 7-8 ड्रॉप जो है वो रिएजेंट टेस्ट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे. देन वी विल वार्म द टेस्ट ट्यूब फॉर 2 minutes up to the boiling temperature. Then observe the precipitate. So greenish, yellows and orange red or brick red precipitates will form. इस प्रकार के कलर के प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिल रहे हैं. ग्रीन, येलो या ऑरेंज रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विल फॉर्म. दिस टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स एंड इज मोर सेंसिटिव देन एनी अदर रिड्यूसिंग शुगर्स. Sugar reduces alkaline CuSO4 to Cu2O which forms colored precipitate. Cupric ions are reduced to cuprous ions. This is the basic principle of this Benedict test. Now क्या इंटरप्रेटेट करेंगे, इसका रिजल्ट इंटरप्रेटेट कैसे करते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स आर डिफरेंट colors. If the test gives blue PPT, that means a concentration of sugar is 0 or negative. Greenish blues PPT is formed, that is the gives results 1 positive because 0.5% sugar is present. And green colored solution is formed, that is we give the result 2 positive because sugar is more. And green PPT is formed, that we will give the result 3 positive. And greenish, for greenish yellow we will 4 positive. And brick red PPT, that is a more than 2 gram percent carbohydrate will present in the test solution. So this is 1 positive, 2 positive, 3 positive and 4 positive. This is the style for the giving the result of qualitative result of Benedict test. Understand? Now next test is Balfour test. Balfour test, it is the monosaccharides containing free aldehyde or ketone group in the presence of dilute acid like acetic acid reduces cupric ions of cupric acetate into a cuprous ion. Cupric ion cuprous ion में convert करते हैं by monosaccharides. So this is a test for differentiating the monosaccharides and disaccharides. So, monosaccharides is performing here its own character as a strong reducing sugars. So these cuprous ions reduces the colorless phosphomolybdic acid to blue colored phosphomolybdous acid. Now Balfour test reagent के लिए टेबल है 2 ml Balfour reagent लेंगे, 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं. देन कीप इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 2 minutes एंड अलाउ टू कूल. इसको बॉइलिंग वाटर बाथ में 2 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, उसको फिर ठंडा होने देते हैं. स्कैंटी रेड पीपीटी स्टिकिंग टू द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, रेड पीपीटी बनता है. दिस टेस्ट इज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड. पहले हमने आपको बताया कि ये दिस टेस्ट Balfour test is only for the differentiating monosaccharide and disaccharide because this test performed by only monosaccharides. यदि ये Balfour test पॉजिटिव आ रहा है, that means in unknown solution में monosaccharides present है, disaccharides absent है. Disaccharide do not reduce Balfour test which is weakly acidic. Only monosaccharide reduce the cupric ions to cuprous ions in weakly acidic medium form of cuprous oxide. Understand? Reaction of this test is the cuprous acetate react with the glucose in glacial acetic acid to form this cuprous ion, and this cuprous ion react with the colorless phosphomolybdic acid to form a phosphomolybdous acid, that is a deep blue color. This is the modified form of this. Now Fehling test. Next is the Fehling test. Fehling reagents
we all when we use Fehling test, we prepared freshly. How we use the Fehling test freshly? Fehling A solution and Fehling B solution, two type of Fehling solution we prepared before the performing the test. And the life of Fehling A and Fehling B is for we can preserve for long time. When we use this test, we mix the in equal amount of Fehling A solution and Fehling B solution, and that is called Fehling reagent. Now in Fehling A solution 7% copper sulfate is present, and in Fehling B solution sodium potassium tartrate and sodium hydroxide is present. So Fehling reagent is prepared by mixing equal volumes of Fehlings A and Fehling B solution at the time of performing the test. So 5% Fehling reagents we take, and we add the 2 ml of reacting mixture and boil the test all mixture. Now red PPT is formed. This test is given positive by reducing sugars. Sugar reduces copper sulfate to cuprous ion. Now Fehling test is also for reducing, differentiating, reducing and non-reducing sugars. Now next test is Nevender test, Nevender reagent. Now composition of Nevender reagents is the bismuth subnitrate, sodium potassium tartrate and potassium hydroxide is present in this reagent, in Nevender reagent. For this test, we use 5 ml test solution. We put the 0.5 ml of Nevender reagent and boil and observe the change in color. If we found the black color after the boiling the test tube, this test is given positive by all reducing sugars. In alkaline medium, reducing sugar reduces bismuth subnitrate to metallic bismuth. Bismuth subnitrate को bismuth metallic bismuth में convert कर देता है. Metallic bismuth is black in color. That black in color indicates the presence of reducing sugars in the solution. Now next test is Selivanov test. Composition of Selivanov reagent is resorcinol and concentrated HCl. HCl में एसिडिक एनवायरनमेंट में रिसोर्सिनोल को डिसॉल्व करते हैं. 3 ml of Selivanov reagent we take in the test tube and put 4 to 5 drop of test reagent and boil for 1 minute. After the boiling, we get the cherry red color that indicates the presence of the ketose sugar in the solution. So this test given positive only by ketose sugars, and it is used for this test used for the differentiating ketose and aldoses and is used distinguish between the aldoses and ketoses. HCl forms furfural derivatives with ketose sugars which forms cherry red colored compound with resorcinol. HCl जो concentrated HCl है, HCl हम as I know that the HCl is also hygroscopic property that convert the ketose sugar into furfural, and furfural reacts with resorcinol to form cherry red color compound. Now next test is rapid furfural test. Rapid furfural test, this test given positive only ketose sugars and given by negative test for aldoses. 1 ml of test solution, add 2 drop of alcoholic alpha naphthol and then add 2 ml of concentrated HCl, then the mixture boil for 1 minute, then cool. After the cooling, we get the purple color of the solution. So this test is given positive only when ketose sugar is present in the test. Is used for distinguish between the aldoses and ketoses. HCl forms furfural derivatives with ketose sugars which forms purple color compound with alcoholic alpha naphthol. It is just similar like to
moles test, what is the rapid peripheral test indicate for ketosis. Now this is the flow chart for identification of the unknown carbohydrate, how we will find the final test of carbohydrate which is present in unknown solution. So the journey will start from the moles test. We will perform, यदि दो आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं ए और बी, और उनमें आपको मोलेस टेस्ट सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. सो मोलेस टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है और दूसरे में नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव विल इंडिकेट दैट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज एब्सेंट. नाउ यदि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो फिर हम उसको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, सबसे पॉलीसेक्राइड के लिए टेस्ट लगाएंगे हम. यदि पॉलीसेक्राइड का आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट, और यदि नेगेटिव आता है तो हम उसके लिए दूसरे टेस्ट लगाएंगे. और यदि मोलेस टेस्ट नेगेटिव आया है तो हम उसके लिए फिर उस प्रोटीन के टेस्ट, बायोलोट टेस्ट वगैरह लगा करके हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें प्रोटीन है कि नहीं है. नाउ यदि इफ आयोडीन टेस्ट इज नेगेटिव दैट मीन्स देयर इज नो पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. इफ आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव दैट मीन्स पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट. ब्लू कलर यदि दे रहा है तो वो स्टार्च है, और पर्पलिश रेड कलर यदि आयोडीन टेस्ट दे रहा है दैट मीन्स डेक्स्ट्रिन है. यदि आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आया है तो उस सॉल्यूशन में फिर हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे, और बेनेडिक्ट टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है दैट मीन्स सॉल्यूशन कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट विद रिड्यूसिंग शुगर्स, और नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव आया तो रिड्यूसिंग शुगर है, और यदि पॉजिटिव नहीं आया है तो इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है. यदि पॉजिटिव आता है बेनेडिक्ट टेस्ट तो फिर हम उसको बाफोर टेस्ट लगाएंगे, और बाफोर टेस्ट पॉजिटिव आने पर दैट मीन मोनोसैकेराइड इज प्रेजेंट. मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज कुछ भी हो सकता है. नाउ वी विल परफॉर्म द रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट फॉर बाफोर टेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन में. तो रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट यदि पॉजिटिव आए हैं दैट मीन्स कीटोज शुगर इज प्रेजेंट. कीटोज शुगर प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड है दैट मीन्स फ्रुक्टोज है. ठीक है. और नेगेटिव आता है दैट मीन्स ग्लूकोज है दैट इज एल्डोज. फिर हम कीटोज शुगर यदि पॉजिटिव आया है रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट, उसमें फिर हम कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सेलेवनोव टेस्ट लगाएंगे. इफ सेलेवनोव टेस्ट इज पॉजिटिव दैट confirmly say that the fructose is present in a known solution of carbohydrate, और यदि नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स ग्लूकोज इज प्रेजेंट. यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर यदि है दैट मीन्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर केवल एक ही हमने बताया है कि सुक्रोज ही होती है, सुक्रोज इज ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर. फिर हम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं. एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद फिर हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे, और इफ विल बी गेट द बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव दैट मीन डाइसैकेराइड, लैक्टोज और माल्टोज है. और यदि देन फिर विल परफॉर्म द ओसाजोन टेस्ट. येलो क्रिस्टल्स अपीयर, कॉटन बॉल स्ट्रक्चर्स की तरह दिख रहा है दैट विल बी लैक्टोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और सनफ्लावर लाइक यदि क्रिस्टल्स बन रहे हैं दैट इज इंडिकेटर ऑफ माल्टोज इज प्रेजेंट. ओके. So this is the flow chart of identification of unknown carbohydrates given in the solution. So this is the practical oriented class. आपको जब प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे अननोन सैंपल तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो यू गो थ्रू इट, और सभी टेस्टों के प्रिंसिपल कैसे करना है ये सब मालूम होना चाहिए. ओके. थैंक यू.